This video is for informational purposes only, based on personal research, and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell, or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. Hello, good morning, fellow traders and investors. Thank you for taking the time for a quick discussion on Nifty. I'm planning to hold such sessions throughout the year more and more, especially after the month of May, to keep your mindset steady, ताकि आप सही दिशा में रहे मार्केट के. And when we are in the right direction of the market, money making is much easier. Whether आप stock buyer, whether you are doing options or whether you are into commodities. Super important कि हम लोग market से guidance ले, and market has been guiding very clearly it is bearish. No, without any confusion with whatever setup you are applying. Only you might be buying in the broad market. Some stocks can go up. That means largely those are hope trades. And hope trades को market heavily punish करता है. So as you are joining, that means you have been a regular follower. Thank you for doing that. I will urge you, don't do these hope trades. The more you do, you will get what the crowd is getting. In this game, 93% fail. जब तक आप दूसरे की तरह सोचते रहोगे, अप्रोच करोगे, you will get the result what others are getting. That is the 93% SEBI is highlighting. But at the same time, trading is risky, and seems like also I received a good package from Dhan. It's not money package, as a gift package, and there also they highlighted possibly trading is not meant for everyone. But ये भी एक issue है कि we have to grow our money. नहीं तो our next generation is becoming poor. This is your hard-earned money, hard-earned wealth. As you deep dive into buying a mobile phone, buying a car, please deep dive into the market analysis. And I personally think you can do it yourself. I have full confidence in all of you. Only things that you stop certain behavior like this prediction behavior, listening to others' behavior, and having hope behavior. These three are a must stop. What I meant by this is I'll show you once again, which I've done. Once again, thankfully, we are now again in the second position in the worst performing stock index in the world. Now, the first one, once again, the Marvel, that is the Argentina Stock Exchange. And this is Sensex, which is similar to Nifty. Once again, one of the worst perform. That means, first of all, trading में it is important कि हम लोग humble हो. When 2021-24, you made money, some people made money, and they thought, hey, boy, I have got the skills. ऐसा ना भी हो सकता है कि मार्केट वॉज काइंड, इट वॉज अ बुल मार्केट. बहुत पुराना कहावत इन आवर बिजनेस, डोंट मिक्स योर ब्रेन विद द बुल मार्केट. नाउ द बुल मार्केट इज डेफिनेटली गॉन, and I have highlighted this over and over. If you don't have sophisticated technical knowledge, practice the Dow structure. Dow is super correct, not late. Highlighted at 26,000, it is not bullish. Highlighted at 25,500, it is not bullish, and it is bearish. Super bearish, technically speaking, use the line chart, draw some levels, and think in terms of possibilities. These are important levels here. Market can stop. There is nothing called will stop. Will बोल के फाइनेंशियल मार्केट में कुछ नहीं होता. All it's a game of probabilities. So usually if you are a buyer, if you are thinking about okay, here I want to look to buy the market, draw these levels, wait for a correction, means with a new positive Dow structure. What is positive Dow structure? This is a higher high.
then somewhat you are good to go. Otherwise, don't challenge it. Don't jump to buy, or if you are jumping, be aware कि further drop down हो सकता है. Let me take you to the monthly chart. With this breakdown, market monthly chart means बहुत ही long term. With this breakdown, at least market is suggesting, hey, I'm no longer bullish. And जो core practitioner होते हैं डाओ का, they will take note of every turn. जो इतना जो small turn हुआ उसका भी note लेंगे. And core practitioners will call this market a bearish market. Monthly supports are usually very strong support. जो आ रहा है आपको 22,200 around 300 around. So I will expect somewhat a stopover over there, but not jump to buy unless I get a signal. And as a trader, first signal will come from the daily chart definitely. 2 hour obviously will come early, but trustworthy daily Dow structure. Currently it is super bearish. No confusion about the market structure. That means क्या करना है इस जगह पे, largely buy trades avoid करना. And if you can play the sell trades like with short futures, index futures, options, it is best to play the short side. जो मेरे केस में मैं कर रहा हूं, and those of you regularly follow, you know that I use the fountain of gold setup, or basically known as the rainbow setup. And with that, I'm super clear that the market is bearish. And currently, ये sectors हम लोग देख रहे हैं, the top sectors, not every sector, very, very broad-based sell-off. In the weekly chart, similar energy, FMCG, only energy is still in the rising in the weekly. But daily chart may rising. This is the daily chart. Sorry, let me go to the weekly chart first. This is the weekly chart. Let it come to daily, and here weekly chart may relatively stronger, healthcare or pharma similar, and somewhat energy. And energy is definitely to note because ये daily may be rising phase में in such a bearish market. So no confusion whether you are a practitioner of the rainbow or practitioner of the Dow. I'll not prefer any other charts like candles, etc. Very, very clear. No confusion. So largely what I'm playing with the options and short futures. Options are right now much better given their risk reward का structure, and largely मैं bearish trade ही play कर रहा. Let's look at more short term charts. थोड़ा short term chart में जाते हैं, and let me make it fountain of gold. That will make the lower meter disappear, which is the main mother meter, and the 2 hour chart काफी टाइम से bearish है. अगर हम लोग का प्लान है, आवर प्लान इज चलो इस जगह पे सम ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं, देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज लाइक एग्रेसिव खेलेंगे विच इज बियर पुट स्प्रेड, या डिफेंसिव खेलेंगे दैट इज बियर कॉल स्प्रेड. मतलब कॉल बेच के खेलना इज बियर कॉल स्प्रेड, बाई करके खेलना इज बियर पुट स्प्रेड. इस जगह पे एक मेजर बैड लर्निंग हो रहा है. बैड लर्निंग इज इन दिस केस क्या हो रहा है, सम पीपल हु लाइक टू बाय आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, दे आर गेटिंग गुड रिवॉर्ड, एंड एक बैड बिहेवियर इज सेटिंग इन कि हे लेट मी बाय आउट ऑफ द मनी. दिस बिहेवियर विल बी सिग्निफिकेंटली कॉस्टली इन द लॉन्ग रन, because not every time market drops like this. And generally एक rule बता रहा हूं, if you are option buyer,
try to play more on the bearish side, क्योंकि bearish side में movement faster होता है compared to the bullish side. And bullish side में better होगा if you go for defensive bearish strategies unless it is a very strong bull market. Currently, जो safe level which we will be able to see with the Rainbow Option Master में suggest किया जाएगा कौन सा level से. Let me make it slightly bigger so you all can witness. 23,600. 23,600 is pretty close. 24,300, which will be above the rainbow candle, which is very strong level, rainbow top in the bearish. That means these areas defensive strategies play करना अच्छा रहेगा. And जब आप bear put spread करते हैं, it is important कि एक slight correction होने दीजिए, जो यहां पे हुआ. And then it was good to go for bear put. फिर से जब मार्केट bearish टर्न ले रहे, अगर इस जगह पे जंप किए, से लेट्स डू एक bear put 23,300 and 23,000, market recovery and you will turn into a loss. But correction के बाद when you go for the means sell resistance trade, एक correction resistance पे पहुंचा, फिर से टर्नर. Let me show you with this chart, with the line chart. A correction, once again starting to break down. उस जगह पे bear puts करना बेहतर होता है. Rather than in this jump, going for bear put या out of the money, क्या होगा? Already premium has gone up significant. Fluctuation has gone up. तो वेगा बढ़ चुका है. जो लोग ऑप्शन जानते, you might be knowing वेगा, which is volatility basically. Fluctuation जब बढ़ जाता है, ऑप्शन का प्रीमियम goes up. तो आपको बहुत कॉस्टली आएगा. नेकेड ऑप्शन कॉस्टली, and bear put spread will go to loss with marginal upside correction. And कोई नहीं बोल सकता कहां तक निफ्टी जाएगा. मुझे तो कोई टॉप नॉच एनालिस्ट नहीं दिख रहा है who said hey निफ्टी will go to 23,000. I don't like to predict. I followed through the market. जो लास्ट नाइट लाइव मार्केट टॉक में मैंने हाईलाइट किया कि एक पॉसिबिलिटी ओपन हो चुका है that Nifty can drop to 21,000, which is the first stronger level. In the monthly chart, ये आपको लाइन चार्ट में नहीं दिखेगा. That's why I generally prefer to use the fountain of gold setup. It gives me better idea. Excel signal and background red bearish जो नहीं हुआ until it was COVID. And I have been warning we are in the late part of the business cycle or recession cycle. तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है where market generally comes and respect is our empty line, which is coming around 21,000. But given the sharp move, let me be very frank, I did not expect immediate such sharp. एक स्टॉप ओवर हुआ which was I was expecting कि 24,000 ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग लेवल था. But now what has become, Nifty has broken below this. So एक longer term bearishness आ चुका है मार्केट. And those who are at very beginning starting level पे हैं and did not study the financial market history, there have been instances where market has gone down 40-50%. If you study 100 years of equity market index with Dow or S&P, it has happened a steady down move of 40% means your stock can go down 60-70%. Prediction नहीं, मैं history आपको बता रहा हूं. So when you are in the stock right now, क्या होना चाहिए attitude?
Either you should have moved out, or you are someone, hey, I'm super excited कि stocks are dropping, जो वॉरेन बाफे हाईलाइट करते हैं, we can buy cheap. अच्छे क्वालिटी कंपनीज सस्ते में मिलने वाला है. इफ यू हैव फेथ कि चलो टीसीएस विल सर्वाइव, ये एआई का जो फेनोमेना, उनका जो चेंजेस हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, समवन क्लिक किया था, लेट्स लुक एट टीसीएस. आपको फेथ है कि ओवरऑल टीसीएस विल सर्वाइव and survive a bit of long term, say 10-15 years. And then you are very excited because this is bringing big discount, bargain. CDSL, मैं almost guarantee दे सकता हूं कि ये company is going to survive for the next 15 years. That means you are super excited कि CDSL going down and let it go down more. तो ऐसे कंपनीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए, विच हैव, क्या है, मोट. मोट मतलब क्या? नो न्यू कंपनी कैन बिकम लाइक सीडीएसएल. नो न्यू कंपनी कैन बिकम लाइक एनएसडीएल. नो न्यू कंपनी विल बिकम लाइक बीएसई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सो एस एशियन पेंट्स. सो ऐसे स्टॉक, द फर्स्ट बाइंग जो आप सोचोगे कि लेट मी ट्राई एशियन पेंट्स बाइंग, कैसे बाई करना? Of course, Rainbow member, you have the fountain of gold, but those who are not Rainbow member, have faith in the Dow structure. Let it create a strong bullish move. Broad market एक stable हो जाए. Let TCS create a Dow structure, and then you can somewhat think about buying. TCS had highlighted around this level कि risk बढ़ते जा रहा है. Now significantly gone down. So if you are not excited कि stock market going down, and हर दिन अपना पोर्टफोलियो देख रहे हो कि जो रेड में है, that is the wrong approach. टेंशन बढ़ते जा रहा है. फाइनेंशियल मार्केट में टेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता. सो इफ यू कॉट ऑफ गार्ड कि अच्छा मुझे पता नहीं था, आई डिड नॉट लुक एट डाउ, काम डाउन, रिलैक्स कीजिए एंड सॉर्ट आउट कीजिए. लुक एट द कंपनीज राइट नाउ, क्या क्या वनरेबल ज्यादा है. इफ देयर एनीवन इन द जिनसॉल, आइदर यू बुक प्रॉफिट, और इफ द प्रिंसिपल इज कि मैं कभी लॉस नहीं बुक करूंगा, देन क्या आप समझिए कि योर पोर्टफोलियो टर्निंग इनटू प्रॉफिट कैन बी लॉन्गर. जनरली मैं संडे स्टॉक स्टोर में कवर किया था कि इफ यू होल्ड अ स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1 year, योर लॉस मेकिंग चांस becomes low to 29% generally. And if anyone holds a stock for 13 years, loss making chance falls to 1%. That means आपका पोर्टफोलियो लॉन्गर होल्डिंग के लिए चेंज हो गया. बट बेटर मैं सजेस्ट करूंगा, यू सॉर्ट आउट द स्टॉक्स, लुक एट देयर बैलेंस शीट. लॉट ऑफ इंडियन स्टॉक्स वेर ओवरवेल्म्ड, and look to open up to different other type of asset class like gold. डेफिनेटली बॉन्ड आपके कंसिडरेशन में होना चाहिए. ये जो म्यूचुअल फंड एंड मे बी सम प्लेटफॉर्म हाईलाइट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट गिव यू 7% एंड दिस गिव यू, स्टॉक कैन गिव यू 10-12. Now look at fixed deposit wale, they are super laughing, and whether our portfolio, those who are into stocks, are going down significantly. To have the principle correct, my friends, this is a significantly notable bearish market. I don't predict, so I'll not predict when it will recover. But I tend to follow certain people
and one of them very important person, Larry Williams. Many of you may not heard of him. He is a person who made 10,000. It's a record 10,000 into 1 million into a year. In a year. And Larry is suggesting, Larry is good with his cycle analysis, but he's into prediction and forecasting. He's somehow suggesting the buying date will come around May 27th. But just because Larry is saying, I'll not jump in, I'll wait for my signals. So around late May, if Larry is right, late May पे further buying आने का chance है. And Larry if is also right, then वो buying आने से पहले this week to next week, Larry don't do Indian market, वो highlight कर रहे हैं कि US market will face heavy sell-off starting this week and next week. जो यूएस मार्केट जो डाउ जोन्स बियरिश डाउ स्ट्रक्चर, नैस्डैक काफी पहले से बियरिश डाउ स्ट्रक्चर, S&P 500 दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी इंडेक्स, क्लियरली बियरिश डाउ स्ट्रक्चर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली गोइंग. ट्रेडिंग में first, one of the important principle, many I have highlighted by Charlie Munger, Howard Marks. If you think like others, दूसरे की तरह सोचेंगे, you will get result like others. In this game, 93% fail. They are the others group. Thought process change करना पड़ेगा. I use indicator, but trading is never about a game, only about indicators. Indicators help, but not mandatory for success. Indicators without right mindset, it is not going to work. So I remain significantly, notably bearish. मैं बहुत पहले से highlight कर रहा था without prediction, क्योंकि market में दिख रहा था. Slowly market बोलता रहा, be careful. And cycle analysis से I started going into bonds before, around जो लोग मेरे वीडियो फॉलो करते हैं, अराउंड अक्टूबर नवंबर मैं सजेस्ट कर रहा था कि आई एम गोइंग, मैं दूसरे को सजेस्ट नहीं करता हूं, कि आई एम गोइंग 70%, 80% into bonds. And now my money is fully protected, no matter how much Nifty drops. कुछ स्टॉक्स अभी भी मिल रहे हैं विच आर स्ट्रॉन्गर. फॉर एग्जाम्पल जो स्टॉक्स आप है उसको मत देखिए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए. आज कौन सा आप है? फॉर एग्जाम्पल एक्मे सोलर और LTTS, एंड आई विल यूज स्टॉक मास्टर फॉर दिस. इट्स अ जंप बट नॉट रेडी. वीकली चार्ट, इट्स अ जंप नॉट सिग्निफिकेंटली रेडी. Weekly chart, whether rainbow or the Dow, still not bullish. So at the sake of jumping, don't jump. But ये एक टाइम है जो आपको बढ़िया डिस्काउंट ला रहा है इनटू स्टॉक्स. सो सॉर्ट आउट कि जब रिकवरी होगा, विच आर द वंस यू वांट टू बाय. ये वो टाइम है काम करने के लिए कि प्रिपेयर. Muthoot Finance, if you believe कि चलो ये it's a good one, then wait for that opportunity. If you look at Cupid, Dow structure बताया ना यहां पे क्लियरली कि भाई मैं नो लॉन्गर बुलिश, आई एम टर्निंग बियरिश. फिर भी रहोगे आइदर लॉस या कम विद द एक्सपेक्टेशन. नहीं भाई लॉस हो सकता है, आई डोंट केयर, आई एम लाइक मिस्टर बाफे. लॉस हो रहा मीन्स गोइंग डाउन, आई एम मोर एक्साइटेड, आई विल बाय मोर क्यूपिड. इफ यू लुक एट अ ब्यूटिफुल परफॉर्मिंग स्टॉक से अशोक ले लें, यहां पे डाउ ब्रेक हो गया, बताया कि इट्स नो लॉन्गर बुलिश. That means if you stay, either get loss or be prepared, excited. Hey, I'll buy Ashok Leyland more. It has a good business. So this should be the right attitude, friends.
This was just a quick look into the market condition. So overall, my view is very bearish and very clear from quite a long time. Not much to add. We have about 10 minutes. If you have any particular questions, I'll be happy to answer them. The recording of this session will be available in my YouTube channel. And मेरे social media follow करने के लिए just come to my website. Under social footprints, you can check. This is my WhatsApp channel. I'm very, very excited and pleased to see many of the Rainbow members. उनका जो hard work है, that is paying off. Prashant ji, congratulations. You are able to do well even in this kind of market. How you are able to do this? Of course, you are highlighting it. It is definitely my guidance and Rainbow, but it is also from your side कि आपने commitment दिया, commitment to success. You are ready to chalo work harder, and that is paying off. All these are free channels, so anytime if you want, you can join. And I'll suggest regularly join my live market talk to remain updated and improve your knowledge. Another free session with Sunday Stock Store. So इस हफ्ते का topic I'm thinking about, should it be Mado or underdog theory? Let's see. So coming to this session, you can remain aware of the current market condition without prediction. Prediction का जरूरत नहीं. Following the market guidance is enough. Commodity में अभी भी opportunities आ रहे हैं. Crude oil, let's a quick look before I start taking a query. Crude oil daily chart के हिसाब से. Just a moment, let me bring the daily chart. It has broken into new high closing wise. Morning को natural gas in the showing bullishness in the daily, good carving. एक carve बोलते हैं इसको. This is sometimes called saucer, sometimes rounding bottom, but this is a good carve structure. And 2-hour chart is giving a breakout, attempting natural gas international, natural gas India also closed above this. So कुछ जगह पे buying का opportunities है. Bad news for generally the regular जो traders हैं, don't trade that much into commodities. Gold एक range में, तो गोल्ड कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है टुवर्ड्स द इक्विटी सेलर. एक टाइट रेंज के अंदर ऑपरेट कर रहा है, which I have said many times. I don't personally like ranges a lot. I like trends. ट्रेड में पैसा बनाना बहुत आसान होता है. And from the rainbow chart, I can see now risk is going up in gold for a further sell-off, जो बहुत नेचुरल होता है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस. मतलब जो रिसेशन साइकिल आता है तो उसमें गोल्ड many times decline initially. You can see the COVID 2008-9. So money making chance बन रहा है, but buy side stocks में कम है, difficult है. शांत रह के माइंड को ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So friends, best wishes from my side. Let's look at some of the queries you have. I want to buy ports, waiting for relief. Do you feel it can come today? I don't know, sir, because as I said, Prashant ji, I don't predict. I follow the market. क्योंकि ये जो चार्ट है, this is a major mistake. Another वही मैं बोल रहा हूँ, if you think like others, दूसरे सोचते हैं क्या हो सकता है, can it come today? Anything can happen. This is, let me go to Nifty and change the setup to fountain of gold. First of all, अगर correction मिल रहा है, that part nobody knows. Nobody will bet their house कि चलो Nifty में आज correction आ ही जाएगा for sure. But if it is a correction, let me adjust the chart. Definitely वो आपको पहले दिखेगा in the 15-minute chart. मतलब इंट्राडे चार्ट जो होता है 15 मिनट के चार्ट में. लेट मी ब्रिंग द लाइन फर्स्ट एंड बाद में आई गो टू द रेनबो. इट हैज नॉट येट कम. सो कभी कभी ट्रेडर्स को क्या होता है, पेशेंटली वेट करना होता है. आई एम हेवी बियरिश
But since 2400, I've taken 0 position new. हर दिन ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, स्टिक टू द गेम. तो एटलीस्ट 15 मिनट में क्या दिख रहा है दोस्तों? नो करेक्शन सो फार, वेरी वेरी बियरिश निफ्टी इन 15 मिनट चार्ट एज. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रशांत जी, आई डोंट नो द फ्यूचर. ये मिस्टेक होता है कि लोग सोचते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू नो द फ्यूचर, बट ये चार्ट प्रेजेंट दिखाता है, इट डज नॉट शो द फ्यूचर, नो मैटर विच एवर इंडिकेटर यू अप्लाई. रेनबो के साथ आई कैन टेक सम गेज कि क्या क्या हो सकता है. लाइक इफ निफ्टी बाउंस बैक, दिस विल बी द स्ट्रोंगर लेवल. जैसे और फाइन ट्यूनिंग की निफ्टी में करेक्शन हुआ 15 मिनट एंड दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट. उसमें क्या चाहिए था कि माइंड क्लियर कि मैं शॉर्ट ही खेलना चाहता हूं, ब्रॉड मार्केट शॉर्ट, आई विल नॉट गो फॉर द बाय. सो ये था अपॉर्चुनिटी. अब क्या करना पड़ेगा एज ए ट्रेडर? पेशेंस, वेट आउट, let the correction happen, let the turnaround come, whichever your setup, go in with a full guarantee कि nobody knows whether success होगा नहीं. That means what you have to do? Risk management. How much risk you are going to take. I just want to ask a question. While starting a bear call spread, do we need price action neutral followed by price action bearish? Initial level पे sir you can rely on the signals, but ये मैं बोल रहा हूं कि रेनबो सिग्नल्स आर ग्रेट, बट यू कैन ग्रो बियॉन्ड सिग्नल, देन आपका ट्रेड और भी बढ़िया. प्राइस एक्शन न्यूट्रल में एंट्री करने से बेटर है प्राइस एक्शन बियरिश. लाइक मैं अपना ट्रेड के बारे में बता सकता, आई डोंट नो क्या करेंगे दो लोग. ये जब कैंडल था मुझे बहुत बियरिश लेने का मन हुआ, बट लेट मी शो यू विच कैंडल, दिस वन. After correction, full red, but white cross outside. So what I did, small quantity first. The moment it come the red next one, I was sure ki chalo, now I am right. So added more quantity. And then I was sure ye jo price action neutral, I did not worry that much. I knew this was just because of a technical situation. Stocks like Dynamic Test, Solar Industries are down a lot, but the weekly chart, yeah, आपको वही मैंने 2-3 वीडियो पहले बोला था कि बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि इवन इफ यू गेट अ गुड ट्रेड, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. लेट मी ओपन अप द स्टॉक मास्टर, नॉट दिस वन. क्लियरली दिखा रहा है लैकिंग सम स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का लैकिंग होने का मतलब है इट कैन गो फॉर सम रेंज बाउंड, बट दिस इज अ फ्लैट लाइन, वेरी स्ट्रॉन्ग. डेली चार्ट में आपको बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा. ये रहा. इफ इन द वीकली चार्ट काम रहिए. when we went in or you went in, you should have expected चलो इतना लॉस तो होगा ही. that means it has not happened. ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में क्या होता है, मार्केट में हेवी करेक्शन, दे विल करेक्ट, एंड द मोमेंट मार्केट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दे विल आउट परफॉर्म. आप देख लेना, ऑलवेज इट इज द सेम. स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स will suffer with market down move. जो डायनामेटिक आप बोल रहे हैं, लार्जली दिस इज, जो लोग नहीं जानते, दिस इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर. जो सोलर इंडस्ट्रीज, दिस इज अ नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन. इसमें क्या था, ब्रेकआउट. दो डिफरेंट है. ब्रेकआउट जब फेल होता है, ये कॉमन रूल याद रखिए, ब्रेकआउट जब फेल होता है, बीट स्टॉक, कमोडिटी, विच एवर, risk significant goes up for opposite side big move. Solar industries is a buy support trade, and it has much stronger base compared to Dynamic. So दोनों stock same नहीं. So this is from a strong sector. If you want to remain in stocks,
remain in the strong sector and have a slight patience, कहीं ना कहीं पे छोटा सा भी करेक्शन होगा मार्केट में, these strong stocks will do better compared to other one. Want to buy project? This is done. How to become a rainbow members? Currently, I will be out of India, so please wait out if you want to join, and don't join for the sake of indicators. Have ki commit कीजिए कि I will have a different mindset. I'll not think like others. I'll cover this psychology classes. You will try to. मैं पूरा साल तक क्लास लेता हूँ रेनबो में. Every week, almost on an average, one class. So I'll be back in April. एंड उसी हिसाब से पोजीशन लिया कि 30 मार्च निफ्टी रिमेन्स हियर, पूरे पुट में फुल प्रॉफिट आएगा. So I have prepared well for going outside. So I'll be back after April 1st. So wait out till April 1st and then you can reach out to us via the website and we will definitely take up work, open up to different asset class. हम लोग different asset class cover करते हैं including SIPs. ऑलरेडी हम लोग का जो SIP है, जो लोग यूज की बोथ इन मास्टर क्लास और रेनबो, both I have covered. They are outperforming any mutual fund. कोई भी म्यूचुअल फंड इंडिया में है, our SIP is simply outperforming each and every one of them. So पैसा बनाया जा सकता है डिफरेंट तरीके से. इशू इज रेनबो के अंडर 35 प्लस स्ट्रेटेजी है. Nobody is doing all the strategies including me. मतलब पहले डिसाइड करना होगा माइंडसेट क्या आपके साथ सूटेबल है, then you will approach the trade. So if you think you are ready to commit to different thinking, different approach, I would like to welcome you all and just reach out to us after 1st of April. क्रूड ऑयल एज विनायक जी मैंने दिखा, क्रूड ऑयल तो बुलिश है. अब आपको क्या करना है कि मिनी बाई करेंगे, मेगा बाई करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, लेट्स रिमूव दिस रेनबो फॉर नाउ बिकॉज सम ऑफ यू मे नॉट हैव रेनबो. एंड once again, trading is never about indicators alone. Ultimately, it will boil down to the mind game. सो क्रूड ऑयल का हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ट्रेंड को राइड करना. अब अगर ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, चलिए 2 आवर में आपको पैनिक हो जा रहा है एंड होल्ड नहीं कर पा रहे, देन ETF, USO, यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड, ETF के साथ ETF रिस्क इज लोअर कंपेयर टू फ्यूचर्स. क्रूड ऑयल चार्ट वाइज आई एम बुलिश, बट क्या होगा क्रूड ऑयल में, दैट विल डिपेंड ऑन ईरान वॉर. दैट पार्ट आई डोंट नो, मींस ईरान एग्जैक्टली क्या करेगा, दैट पार्ट आई रियली डोंट नो. नोबॉडी नोज एक्चुअली. लाइकली दिस वॉर विल बी लॉन्गर एंड ट्रंप को समझ में आ गया है. दैट्स वाई ट्रंप का ट्वीट, इफ यू हैड टेकन अ लास्ट डे लुक, उन्होंने क्या बोला, oil price rising is good for US because US is an exporter of oil. Suddenly who was saying कि oil price मैंने नीचे कर दिया since I have come to, which actually he did, now saying उल्टा गाना गा रहा. That means this is the indication Trump is understanding this could be a long war. And the longer a Strait of Hormuz remains closed, risk will be higher, significant. So crude oil, broadly bearish. So I have to make a large portfolio. Is it the right time? कभी किसी को, including भी, मुझे मत पूछे. Definitely I can guide. आप मार्केट को पूछे. कौन सा मार्केट? निफ्टी 500 और CNX बोलते हैं, सॉरी CNX, मतलब निफ्टी 500, CNX 500 इज द टिकर. लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, वीकली चार्ट.
इज इट द राइट टाइम? नो, बियरिश. और कैसे एक पैसिव स्ट्रेटेजी विच आई विल शेयर इन संडे स्टॉक्स टर्म, आई एम टेलिंग यू how to buy into small cap ETF or mutual fund. Nifty PE, कुछ नहीं, these are called passive investment strategies. Nifty PE, current PE, ये रहा. If you search current Nifty PE, वो आ जाएगा. Let me not show it here. 20. Whenever Nifty PE is below 15, it tends to give you better return. कौन सा सेगमेंट गिव यू बेस्ट रिटर्न? स्मॉल कैप. बट लेट पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, स्मॉल कैप इज द वर्स्ट. ये रहा. रेडी नहीं. तो अभी आपके पास क्या चॉइस है? पैसा डालो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड रोल टिल द टाइम कम्स. उससे क्या हो रहा है? यू आर आउट परफॉर्मिंग. अगर आपको म्यूचुअल फंड को बीट करना है, otherwise you can go to mutual fund. You have to outperform in the bear market, much easier. आप मेरा वीडियो रेगुलर देखोगे, you will actually fall in love with bear market. I love bear market way more than I love the bull market. पैसा बनाना और पैसा भी आउट परफॉर्म करना इजी होता है बियर मार्केट. जस्ट होल्ड कैश एंड यू आर आउट परफॉर्म. आउट परफॉर्म पे ध्यान दीजिए. सिंपल रूल के साथ, आइदर स्टॉक, देन आई रिमेन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सेगमेंट. से फार्मा आज डाउन है, बट चार्ट स्ट्रक्चर मच बेटर देन आईटी चार्ट स्ट्रक्चर. अभी जाओगे क्यों? आपका पैसा इज नॉट पिंचिंग यू, राइट? Right now is not a good time and you don't need anybody's advice. Just wait. Choose which company you will invest in future for your kids or whatever your goal is. Say you think, okay, Infi is a great company. I like Infi. You can do some AI based research and then patiently wait. It is not ready. डाउ स्ट्रक्चर देगा, लो नहीं ब्रेक करेगा, इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. यू विल गेट सम गुड गेम्स एंड विद द रेनबो ऑब्वियसली यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कब बाई करना. जैसे वन ऑफ माई स्टॉक, डोंट बाई बिकॉज आई हैव बॉट इट, लुपिन, not significantly performing, but see, money is protected, not significantly down. Only reason I remained in the strong stock. Faida, it does not go down significantly. That can be achieved with simple Dow structure. Or obviously Rainbow is far more advanced than the Dow structure, so it is slightly मेरे लिए बेहतर. But Dow use कीजिए sir या Rainbow. Trust me, the game will come down to the mindset. Rainbow alone can't help unless mindset is not clear. WhatsApp channel या any social media, just go to my website and आप follow कर पाओ, whichever. अखिल जी, आप, मैं भी बहुत खुश हूं कि you have done pretty well as well. Good entry for long time frame. पहले फर्स्ट इज द टाइम फ्रेम. अगर लग रहा है कि चलो कि नेचुरल गैस, एक बार चार्ट देखते हैं. नेचुरल गैस सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल चार्ट भी देखिएगा. लेट्स लुक एट द डे. चलो, लग रहा है कि एक पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं कि राउंडिंग पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे करेंगे? एमसीएक्स फ्यूचर्स इनिशियली डर लग रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड को राइड करना. मे बी नेचुरल गैस बहुत फास्ट ऊपर आएगा. यूएनजी नेचुरल गैस का ईटीएफ थोड़ा और बुलिश है. BOIL, बॉयल. बॉयल इज व्हेन नेचुरल गैस विल बी अप 10%, बॉयल विल बी अप 20%. मतलब इसको बोलते हैं लेवरेज्ड ईटीएफ.
So through market is super, is it what to go for stocks like Coal India? Yes. Mark Minervini looks at individual stocks. ये इंपॉर्टेंट है कि चलो मेरा वी विल नॉट बेट आवर फुल हाउस, मतलब जितना पैसा घर में चलो डाल दो, दैट्स नॉट दैट. ऑफ कोर्स यू रिमेन इन द, जस्ट बिकॉज डरने की कोई बात नहीं है. कोल इंडिया क्या बता रहा है? बताया बियरिश नहीं ना. whether you use Dow once again or whether you use the stock master, bullish. There is no need to panic immediately. With the full guidance कि भाई 500 is an important level, कोल इंडिया उधर एक स्टॉप ओवर करेगा. एक साइकोलॉजी लेवल है कोल इंडिया. And market bearish, so immediately I'll not expect Coal India will go. But Coal India is a good stock. If petrol में trouble है, LPG trouble है, then what is required? Electricity. Electricity मतलब India coal, NTPC. And Coal India, of course, they are good choice right now. Don't just exit because broad market is down. Trump's gone crazy. You can call it, but there are geopolitics में संजय कुमार जी बहुत कुछ consideration में रहता है. Like रशिया के साथ जो टेंशन, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज हिस्ट्री. व्हाई वी आर हियर, हिस्ट्री. रशिया के साथ ये जो टेंशन, दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1922. ये जो यूरोप का जो डायनेस्टी, दैट मीन्स जो यूरोप का जो रॉयल फैमिली, they were closely linked to Russian royal family. And Russian royal family was murdered, killed during the uprising of Lenin, Vladimir Lenin, Trotsky, and Stalin. So we can trace back to history for many reasons. Trump's gone crazy, yet we can say that to some extent, but there are other reasons behind what exactly going on. And Iran ka issue is not necessarily oil. This I have highlighted. Iran's issue could be natural gas. Iran has a big reserve of natural gas. So this war could be futuristic, but I think what Trump mistook, because he's just a president, he has many advisors. I think he got wrongly advised कि if US attacks Iran, वहां के लोग आके, like what happened in Iraq and Libya, they will help to fall the government, which did not happen. Let me look at last questions from you, Coforge. इसीलिए बुक पढ़ना बहुत अच्छा होता है. रीड कंटिन्यूअसली, स्पेशली हिस्ट्री इज वेरी वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड. कोफोर्ज स्कूल में नहीं था फॉर श्योर, बिकॉज आवर सिस्टम इज बैड. कोफोर्ज इज बियरिश. इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. बट जस्ट बिकॉज सपोर्ट लेवल विल नॉट जंप इनटू इट. वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इज दिस. कोफोर्ज वीकली देखे, डेली देखे, वेरी बियरिश. आज जो हो गया. इफ यू आर इन अ लॉस, ओके, बट ये जो बिजनेस साइकिल मैंने हाईलाइट किया, दिस विल कम ओवर एंड ओवर. लास्ट 100 ईयर्स से आ रहा है. आज एक खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि ऐसा हुआ, आई विल नॉट रिमेन इन अ बैड स्टॉक, बैड फेज स्टॉक. बैड स्टॉक नहीं, बैड फेज स्टॉक. डाउ ने बता रहा था बार बार, even if you had exited in small loss early, like many of the Rainbow members, you exited maybe in some case small loss. Now you are super happy, your money is fully protected. हम लोग का क्लियर सिग्नल था. सो कोफोर्ज कोई रीजन नहीं है दोस्तों ये बुलिश होने का. इट्स वेदर आई यूज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और डाउ. दीज ओनली टू थिंग्स आई विल यूज टू एनालाइज. Both are suggesting very bearish. कितना गिर सकता है?
आई डोंट नो, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. Whether it is undervalued, that we can see. What is the level Charlie Munger highlighted? Warren Buffett's 15. Where Warren Buffett bought Apple and Apple went up 500%? 15. That means it is not gone undervalued. Still 31. And if earnings come kharab, this P ratio will be higher. It comes every quarter. So exactly मेरे पास कोई reason नहीं है कोफोर्ट बाय करने. But I can't suggest trade to others. I hope आप सोच समझ के trading and investing करेंगे दोस्तों. I hope this discussion was helpful to you. Best wishes to you from my side towards your trading and investing. And as always, happy trading, happy investing.